In German language, we have four types of article. One we called as nominative case. Pen down, please. Nominative, accusative. Nominative, Repeat after me. Accusative, dative, accusative, and accusative, genitive. dative, Is it clear to you? And genitive. So basically, preteric. nominative is very simple. The moment we have noun, we say the man, the boy, the girl. The nominative stand for noun. Nominative, the name. Nominative stand for the name. So, for example, I will say, let's take an example. The man. Is it clear to you? The man. So, have you done nominative article? Tell me. There, the, does. Remember, there, the, does. What is there? Tell me. There we use for There, masculine the. the. We use for masculine the. Is it clear to you? Sick. Yes Is it sir, clear? वो white board close हो गया. Okay, 1 second. Remember, we have done there, the, does. There we use for Yes sir, yes yes. masculine the. The we use for, tell me, feminine Feminine the. and Is it for clear? women or girls like. And yes, and das is used for neutral, Uh, neuter. neutral, yes. Is it clear to you, my friends? Yes sir, Clear? yes sir. So repeat after me. There, the, There, das. the, does. This is my nominative. If I will say the man, so man is what? Masculine. Man is what? Yes sir. Masculine, Ma male, dear man. masculine. Basically, nominative, the moment I'm taking the name, dear man, direct name, the man, dear man. If I will say the woman, die Frau, die, die is what? Lady, For die Frau. Frau is for woman lady. or girl, lady. Is it clear to you? Yes sir. Dear man, the man. Die Frau, the lady. Is it clear to you? Tell me Yes if. sir. So this is your Yes sir. nominative, which represent direct noun. But one Okay. case, we have accusative article. I'm talking for the. There are a lot of the in German language. I'm using for accusative case in German language. Pen down, please. Okay. Accusative case in German language. Accusative case is what? In masculine, accusative will convert it into then. Yes, the. In accusative case, the would be masculine the, then. And feminine would Then be the also, the feminine, and plural would be the only, and das is neutral only. So in case of accusative case, the accusative article, your masculine would be den. But the question is this: what is accusative case? Accusative stands for which marks pronoun. German accusative case, which mark the direct object of a sentence, indicating noun and pronoun, which is of the which receive the action of the verb, which receive Okay. the जिसको एक्शन रिसीव होगा ना, हाँ which जी. receive the action of the verb, that is we called as accusative. Pen Accusat. down, please. Where which receive. So now, for example, what is nominative? Let me explain to you. Nominative is your direct subject, action taken. If I will say the man hit the rat. Pen down, please. The Okay. man The hit the man. rat. Is it clear to you? What is the man? Direct Yes. noun is what? The man. Tell me yes or The no. man. Yes, no. Yes, sir. Dear man. Is it clear to you, my friend? Yes, sir. Dear man. Why dear man? Tell me. Because this is direct noun. Dear man. Is it Yes, clear to sir. you, my friend?
What is your Yes, sir. vocab to hit? Schlag. We have Slak. a verb, schlug, hit. He hit the man. Schlag is a full verb. Der Mann, because we have a conjugation, schlug. What is schlug? Hit. Can you spell it, sir? Shlak. Can you spell it? Okay, okay, okay. I see. Schlug. Is it clear to you? Hit. Now, over here, for example, the man hit the rat. Rat is what? Rat. Basically, rat is your female. Die Ratte. Okay. Rat we called as female. Die Ratte. But you know what? Action taking die Ratte. अब बहुत ध्यान से समझना दी रात के आपका आकुजाटिव केस है नॉमिनेटिव नहीं है अच्छा आकुजाटिव में एक चीज बताओ आकुजाटिव क्यों है एक्शन किस पे टेक प्लेस हो रहा है रैट पे हो रहा Yes, sir. है एक्शन जो एक्शन रिसीवर है ना वो आपका आकुजाटिव है ये समझना आपको जो Okay. एक्शन दे मैंने एक्शन दिया मैंने आपको एक्शन दिया जैसे मैं बोलूं गुरप्रीत ने मैं आपका राइट गुरप्रीत टीच टीचेस द बॉय इज इट क्लियर टू यू Yes, sir. क्लियर व्हाट इज द vocab to Yes. teach unterrichten pen down please unterrichten is to Okay. teach let me write it down we have a vocab unterrichten unterrichten is to teach unterrichten repeat after me Unterrichten. unterrichten Unterrichten. is to teach is it Unterrichten yes is to teach. unterrichten that is to teach Unter now what is the present tense present tense of unterrichten I teach ich unterrichte Unterrichten. du Ich unterrichtet unterrichte. er sie es unterrichtet wir Yes. unterrichten ihr unterrichtet and sie unterrichten so basically this is what your conjugation unterrichten but I'm talking about Gurpreet teaches the boy बहुत ध्यान से समझना Okay. एक्शन टेकन कौन है गुरप्रीत तो डायरेक्ट नाउन हुआ गुरप्रीत देखो नॉमिनेटिव केस क्या है आपका नॉमिनेटिव जो आपका डायरेक्ट एक्शन हो रहा हो यहाँ पे गुरप्रीत क्या है गुरप्रीत टीचेस द बॉय क्लियर Yes, sir. व्हाट इज गुरप्रीत ओवर हियर टेल मी गुरप्रीत इज टेकिंग द एक्शन कौन ले रहा है टीच करने का एक्शन कौन ले रहा है गुरप्रीत सो Boy. गुरप्रीत और जो गुरप्रीत है किससे कॉन्जुगेट होगा वो एयर जी एस से कॉन्जुगेट होगा क्योंकि वो ही शी इट है क्लियर Yes, sir. तो गुरप्रीत unterrichtet द बॉय वैसे जो द बॉय है वो क्या होता है डेयर युंग क्योंकि मैस्कुलिन है तो आप डेयर युंग लगाओगे टेल मी लेकिन यहाँ डेयर युंग नहीं Yes, आएगा sir. क्यों क्योंकि वो तो नाउन एक डायरेक्ट नाउन हो गया ये तो एक्शन रिसीवर कौन है गुरप्रीत ने तो एक्शन दे दिया पढ़ा रहा है तो एक्शन रिसीवर कौन है The boy. The द boy. बॉय जो एक्शन रिसीवर है वो आपका क्या है वो आपका आकुजाटिव केस है तो एक्शन रिसीवर पे मैस्कुलिन क्या हो जाएगा देन सो गुरप्रीत unterrichtet den Junge is it clear to you my team tell me yes or no Yes. डायरेक्ट Yes, अब sir. आप डायरेक्ट एक्शन रिसीवर हो रहे हो डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल द डॉग ईट द कैट इज सर इट क्लियर इसमें टू यू यानी जो एक्ट है वो एक्यूजेटिव हो जाएगा. देखो यस जिस जो एक्शन अब देखो द लिखो द डॉग ईट्स द कैट The dog. अब एक्शन कौन ले रहा है डायरेक्ट डॉग ले रहा है अब Yes, sir. डॉग क्या हमारा मैस्कुलिन है सो देयर Yes. हुंड इस्ट एसन वर्ब किया था आपने एसन इज टू ईट Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो yes. एसन का कॉन्जुगेशन East. क्या होता है इस्ट Yes, sir. एयर सी एस में याद आ रहा है आपको इस्ट हम्म. हाँ क्लियर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. देयर हुंड इज Yes. अब कैट जो है वो आपकी फीमेल है लेकिन वो एक्शन Yes, sir. रिसीवर भी है तो आकुजाटिव तो फिर केस भी में आकुजाटिव केस में जो फीमेल है वो क्या रहता है जैसे मैं दोबारा बताता जी. हूँ डेयर वेरी गुड डेयर डी डस ये तो हो गया हमारा नॉमिनेटिव आकुजाटिव क्या हो Yes, गया sir. देन डी
डस। तो जो एक्शन रिसीवर है वो भी फीमेल ही है, तो ये एक्यूजेटिव केस हुआ। Yes, sir. इज इट क्लियर टू यू? सो देयर Yes, sir. you their hund the dog ist die Katze the cat. Is it clear to you? Ist die Cat, sir. Katze the cat female है, but ये accusative because ये action receiver है. Is it clear to you, my Okay. friend? Yes, हमें sir. ये समझना पड़ेगा. Is it clear to you? Yes, sir. कुछ मैं आपको चीजें देता हूँ, जैसे आप बनाओगे. Make a sentence. He plants a garden. He So plants a planson garden. is a verb to plant. हम जब किसी प्लांट को उगाते हैं, planson. Let me write it down. We have a vocab. Pflanzen is to plant. So he plants, er plants einen Garten. It means garden क्या है? He plants a garden. Is it clear to you? Okay. Yes, sir. Einen a garden. Is it clear to you, my friends? Yes, Clear? sir. What to say flower? Flower we call as blumen. What to say the pen down please? The Okay. flowers. The blumen. The blumen is what? Tell me. The flowers. Is it clear to you? Yes, sir. नाउ हमें बहुत सारी ना इसकी अंडर से हमें वर्ब्स पता होनी चाहिए. इज इट क्लियर टू यू? Yes, क्लियर. sir. नाउ पेन डाउन प्लीज. Okay. द लिखें प्लीज. यू वाटर द Yes. फ्लावर्स. यू वाटर. आप जब पानी देते हो किसी पौधों को, यू You वाटर water द फ्लावर्स. the the वी flowers. हैव अ वर्ब गीजन. गीजन इज योर वोकैब. यहाँ पे बीटा का साइन लगा लेना. यहाँ पे बीटा का साइन आएगा, बीटा. मैं यहाँ पे डबल एस लिख रहा हूँ. जो बीटा बीटा साइन बीटा. ए के ऊपर वो दो डॉट बीटा से जो. बीटा यू नो अल्फा बीटा गामा बीटा. ओके 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 ठीक है ठीक. This beta sign we called it double as beta sign. Okay. Is it clear to you? Beta sign, Yes, sir. double Yes, sir. S. Okay. So gizen is a vocab to water. It's not water. Water. Water dena, pani डालना. Gizen. What is gizen? Tell me. वो Gizen is पानी a आप vocab जब of आप water. yes जब आप to water the plant, जब आप gardening करते हो, that is called as gizen. Is it clear to you? Okay. So what he's saying is, you water the plant. Du You. gießt, du gießt die Blumen, क्योंकि conjugate होगा किससे. Du gießt Yes, sir. die Yeast. Blumen. अब मैं आपको gießen D verb की D. conjugation भी बताता हूँ. Ich gieße. Pen down please. Ich gieße, du gießt, sie es gießt, wir gießen, ihr gießt, and sie gießen. You water the plant. It means, what is you water? Die gießt, you water, do, sorry. Es tut mir leid. Do Du gießt. Do gießt gießt. die Blumen. You water the plant. Is it clear to you? Yes, sir. The flowers. Is it clear to you? अच्छा, make a Yes. sentence. I see the tree. I see the tree. I see the tree. मुझे बताओ इसमें. Tell me what is I see. I see is your nominative direct noun. Action किस पे हो रहा है? Tree. आप tree को देख रहे हो. So the tree is what? Direct object. The. That is your accusative. आप डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो. एक्शन किस पे टेक प्लेस हो रहा है? टेल मी. द ट्री पे. Yes, sir. वैसे अगर मैं बोलूं द ट्री, सिंपल बोलूं द ट्री, तो ये तो क्या हुआ हमारा? नॉमिनेटिव हुआ. द ट्री. सिंपल बोलूं Yes, द sir. ट्री, द पेड़. तो डेयर द ट्री, डेयर बाउम. डेयर बाउम इज व्हाट? द ट्री. बट आई एम सेइंग आई सी द ट्री. इश जेह. आई सी मैंने देखा. इश जेह. यहाँ पे द ट्री Yeher. बन गया. क्या बन गया आपका? टेल मी. Then. Accusative. Then. Then bound. Accusative. We have a verb zehen. Zehen is to see. What is the vocab to zehen? Tell me. Zehen is to There see. देखना. is to see. There is to see.
सो हम क्या बोलेंगे? इश जेह आई सी, du siehst, sie es sieht, wir sehen, ihr seht, and sie sehen. Is it clear? ये हमारा conjugation है. Ich sehe, I see. Du siehst, you see. Sie es sieht. Wir sehen, ihr seht, and sie sehen. Is it clear to you, Mikey? Yes, sir. Clear? Now make a sentence. I give her the money. I give her the money. वो ध्यान से समझना. Wait, give me a second. अगर मैं बोलूं आई गिव, मैंने दिया उसे, अब बात को समझना. एक है मैं डायरेक्ट एक्शन ले रहा हूं मनी पे. मैंने दिया, क्या दिया? मनी. एक्शन किस पे हो रहा है? मनी पे हो रहा है ना. Yes, sir. मैंने दिया मनी, तो मैं एक्शन तो मनी पे ही करूं, लेकिन मैंने एक इनडायरेक्ट पार्टिकल लगा दिया, हर. ये क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट हो गया. आप डायरेक्टली नहीं दे रहे हो मनी. हाँ, मनी, आई गिव द मनी, मनी में मैं डायरेक्ट एक्शन कर रहा हूँ. लेकिन आई गिव हर द मनी, मतलब अब हर जो मैंने ऐड कर दिया, वो बेसिकली एक्शन तो मैं मनी पे कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्ट पैसे हर को दे रहा हूँ. क्लियर हो रहा है आपको? Okay. Yes, sir. सो बेसिकली इन दैट केस दिस हर, आई गिव इज व्हाट? आई गिव इज योर Ish. नॉमिनेटिव केस, डायरेक्ट. हर इज व्हाट? योर दाटिव केस. दाटिव, हर इज यहाँ पे दाटिव है, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्शन हो रहा है. आई गिव द मनी, डायरेक्ट मैं Okay. मनी पे एक्शन कर रहा हूँ. आई गिव हर द मनी, बट मनी पे मैं एक्शन तो कर रहा हूँ, बट इनडायरेक्ट मैं हर के थ्रू कर रहा हूँ. समझ आ रहा है आपको? सो जो Yes, sir. इनडायरेक्ट एक्शन होता है, दैट इज योर दाटिव. मनी रिसीव, दैट इज Okay. एक्शन. मनी रिसीव्स क्या है? दैट एक्शन. इज इट क्लियर टू यू? आई इज अ Yes, sir. सब्जेक्ट, डूइंग ऑफ, एक्शन इज गिविंग. यही हो रहा है? टेल मी. हाँ जी, हाँ जी. I is a subject doing of, tell me, the action is Give. given, and the money Hmm. receive the action. और मनी क्या है Her. हमारा? मनी ने एक्शन रिसीव किया, सिंपल हो गया. लेकिन हर रिसीव दैट, रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच मेक हर इन इनडायरेक्ट. समझ आ रहा है आपको? कि मैंने हर Yes, ऐड sir. कर दिया, तो इनडायरेक्टली मैं उसको साथ में ले आया. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. क्लियर. मनी इन दिस एग्जाम्पल इज व्हाट? accusative, and the direct object is what? Tell me. Which is nominative I, direct. Okay. In this example, we can think the money as being accusative, समझ आ रहा है आपको? And Yes, sir. her is your indirect object. Is it clear to you? Okay. Yes, sir. Because it lines up so perfectly with two cases in German. I give her the money. Is it clear to you? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Now make a sentence. I give her the money. Money क्या है आपका? आपका न्यूट्रल है, नॉट न्यूट्रल. तो न्यूट्रल क्या था हमारा? das Yes. Geld. Das Geld. Ich gebe, Guilt. I give. Ich gebe, I give. Okay. Ich gebe ihr das Geld. I give her the money. Ich Ich gebe gebe ihr ihr das das Geld. Geld. Is it clear to you? Yes, sir. Ich gebe ihr das Geld. Okay. I understand, sir. Now, for example, if you say, for example, the tall tree, so I see the tree. I see the tall tree. मैंने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा. नाउ व्हाट इज टॉल ट्री? एक्यूजेटिव हुआ टॉल ट्री, क्योंकि एक्शन डायरेक्टली इस पे प्लेस हुआ है. Yes, sir. और आई सी क्या हो गया आपका? नॉमिनेटिव. Ich. Ich Yes, sir. sehe den hohen Baum, tall tree. Ich sehe den, the.
क्योंकि देन क्यों लगा यहाँ पे, टेल मी। Then इश because it जेह is accusat, देन, हाँ हाँ, because it is accusative. यस, इश जेह, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, इश जेह देन होहेन बाउम, is it clear to you, my team? Tell me yes and no. Yes, sir. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Ich sehe den hohen Baum. It means I see the tall tree. Okay. Here is Make the Hohen is sentence for tall. tall. Is it clear to you? Big. Okay. What Yes. is garden? Garden is a male, masculine. I will say dear garden, the garden. But अगर मैं बोलूं I अपने आप बनाना, I see the garden, तो यहाँ पे द गार्डन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्शन किस पे हो रहा है, गार्डन पे। वैसे तो नॉर्मल तो डेड गार्डन, सिंपल, अगर वो नॉमिनेटिव है, बट accusative में इट इज देन, इश जेह देन गार्डन। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? Yes, sir. क्लियर? Ich sehe. Yes, sir. अच्छा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इश जेह देन ग्रोजेन बाउम, आई सी द बिग ट्री। इश जेह देन ग्रोजेन इज ऑल्सो बिग, ग्रोज बिग, ग्रोजेन, यहाँ पे बीटा का साइन लगा लेना डबल एस पे, ग्रोजेन बाउम, आई सी द टॉल ट्री। इज इट क्लियर टू यू? Hohen is like it is too much difficult. क्या कह रहे हो? Hohen is best for tall. हाँ, Grossen is hohen the groze, groze is also big, big, groze, grozen. Is it clear to you? okay. Yes, Okay, sir. so basically we have a nominative, direct, accusative, जिसपे एक्शन हम लोग लेंगे रिसीवर, एंड dative where we have indirect action receiver. Is it clear to you? Yes, sir. Clear? Okay, now for example, hmm, अच्छा एक हम बनाते हैं, अच्छा एक सेंटेंस क्रिएट करो, Okay. I literally Literally, want to speak and understand in speak foreign and language, but the question is how we can. Yes, I know that we can easily translate if we practice German language is not very difficult, but yes, we need to practice. But yes, we need to practice. Clear? अब इसको हम बदलते हैं. What is literally? Buchstäblich. What is literally? We say literally, literally, buchstäblich. Let me write it down. What is literally over here? Buchstäblich. Buchstäblich is what? Literally. books English. Buchstäblich is what? Literally. Little. Is it clear to you? Ish. Yes, We sir. have a verb möchten. What is möchten? Möchten is a verb to is a vocab. We have a verb. Let me write it down. Login already. Login है तेरा. One sec.
What is möchten? Möchten is what? Tell me. To Houston, would like. Ich möchte. Would like. We say I would like. okay, We say I would like. We say I would like to do yeah, that. That is I would like. You okay, would like. That is a möchten verb. We have a verb möchten. That is, we say I would like, you would like. Is it clear to you, my friend? yes, sir, Is it clear to you, my friend? yes, sir, So, way to understand the möchten conjugation. I would like, you would like. Is it clear to you, my friends? yes, Ich sir, möchte. ओ के ऊपर आप umlaut लगाओगे. Ich möchte. इस ओ के ऊपर आप umlauts लगाना, दो dots लगाना, ओके. Du okay, okay, möchtest. You would like. Er, die, es, möchtet. Möchte. He, she would like. Ich möchte, I would like. Du möchtest, you would like. Er, sie, es möchte, he, she would like. Wir It like möchten, we would like. Ihr it möchtet, was change. yes, you all would like. And sie möchten, they would like. Is it clear to you, my team? Yes, sir, So repeat after me. Present tense conjugation chart. Ich möchte, du möchtest, er, sie, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, and sie möchten. Is it clear to yes, sir, clear? So what is the conjugation? What is the verb? I literally want to speak and understand in foreign language. Now you need to understand how to fabricate the sentences. My friend, I literally want to speak and understand. Is it clear to you? Ich yes, sir. möchte, I want. What is I want? I would like. Ich möchte. Ich wollen, ich Wollen wolle. is also to want, but wollen is to want. That is also to want, and möchten is also to want. So we are doing with möchten verb. Is it clear to you? Clear? Yes, We are sir. doing with this möchten verb. Ich möchte. Is it clear to you? Clear? Yes, sir. I literally Yes, sir. want to speak and understand in foreign language. So ich möchte. Is it clear to you? Yes, Buchstäblich. sir. Hand down, please. Buchstäblich. What is Buchstäblich. Can you spell? buchstäblich? Tell me. Literally. Literally. What is Can you spell it? buchstäblich? Tell me. Let me write it Hmm. down. Buchstäblich. Literally. Buchstäblich is what? Tell me, my friend. Buchstäblich. Buchstäblich or Literally. literally. So, ich möchte buchstäblich. Now, whenever in one line you have two verbs, now I literally want. I want is first verb. In one line you Yes, sir. have second verb speak and third verb understand. Now, the moment you have two verbs together in one line, I literally want. What is I want? I want is a verb. I want क्या आपका verb है. So Yes, sir. whenever you have two verbs together, speak is also verb. So my friends, second verb, third verb, अगर आपके पास दो तीन verbs इकट्ठी आ रही हैं कि लाइन में या दो verbs आ रही हैं, second verb जो है या उसके बाद वाली verbs जो हैं वो हमेशा बाद में लगेंगी. So ich möchte, Okay. I literally want. Is it clear to you? In Yes, sir. einer Fremdsprache, in a foreign language. अब आपका speak और जो understand है ना वो बाद में लगेगा sentence में क्योंकि हमारी दो verbs क्योंकि हमारी second verb आ गई है. पहली वर्ब जब आ जाए तो उस साथ में लिखोगे इश मोश्ते आई वांट लिटरली बुक्स्टेब्लिश. सेकंड वर्ब हो या थर्ड वर्ब हो हमेशा बाद में लगेंगी सेंटेंस के बाद. इन इज व्हाट इन फॉरेन लैंग्वेज इज व्हाट इन आइनर इज अ Fremdsprach. In einer Fremdsprach This sprechen part. und verstehen. Sprechen und verstehen is what speak and understand. Verstehen. Is it clear to you?
So ich Yes, sir. möchte buchstäblich in einer in einer Fremdsprache sprechen und verstehen. So read gonna please. Ich möchte buchstäblich in einer Fremdsprache sprechen und verstehen. Wollen please. In einer Fremdsprache sprechen No, ich und möchte verstehen. buchstäblich, repeat after me. Ich möchte Ich möchte buchstäblich buchstäblich in einer Fremdsprache. in einer Fremdsprache Is it clear to you? yes, Sprechen sir. und verstehen. Sprechen und Sprechen und verstehen. verstehen. What is verstehen? Wie somebody is for. Verstehen is to understand. Okay, verstehen is to understand. Yes, make a sentence. आप बनाओ. I literally want to observe and explain. Wait, sir. I Give me literally 1 minute. इसको बनाओगे आप. I just want to see कि आप कितना बना पा रहे हो. I literally want to observe Want to observe and explain something in foreign language. क्या बनाओ? wait, sir. Ich हम्म? Ich möchte. möchte अब yes, sir. देखो I यहाँ will. समझना. Ich möchte आपने लगा दिया, लेकिन जो I ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन है वो कहाँ लगेगा? बाद में लगेगा, बिकॉज दीज आर द सेकंड वर्ब्स. क्लियर? okay. ये सेंटेंस कॉन्जुगेशन है. तो ich möchte etwas is what? Something in einer In Fremdsprache inner beobachten und erklären. ये समझो आप कि मैं क्या बोल. Ich möchte, I would like, I want something. यहाँ से ये जो है ये पहले आ जाएगा. समथिंग इट वाज इन आइनर इन इन आइनर Fremdsprache beobachten und erklären जो है ये सेकंड वर्ब है, ये बाद में रिप्लेस होंगे. इज इट क्लियर टू यू माय टीम? yes, sir. मेक अ सेंटेंस. आई लिटरली वांट. पेन डाउन. आई Literally want लिटरली वांट टू observe, sorry, I literally want to aware and verify. No, I literally want to aware and uh literally want to aware and represent the people. Okay, I literally want to aware. So ich möchte, I want. Tell me, what is ich möchte? Tell me. I want. I want Okay, ich möchte. The people. Dimension. What is the people? Tell me. Mention. Dimension. Because the people पहले mention आएगा. Aware and represent आपका क्या verb है? Tell me. वो verb है, वो लास्ट में आएगा. second Dimension of Claydon